Factors governing permeability of a soil. Permeability of a soil. Size and shape of particles. Size and shape of particles. Size and shape of particles. Factors governing permeability of a soil. Size and shape of particle. Size and shape of particle. Factors governing permeability of a soil. Size and shape of particle. Factors governing permeability of soil. Size and shape of effective size. इफेक्ट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या क्या चेंज करता है इफेक्ट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल soil is a particular particle size analysis to separate soil mass into different size fraction or mechanical analysis gradation or sieve analysis particle size analysis mechanical analysis gradation or sieve analysis size size and shape of particle D30 30% of the given sample is less than is less active size of the particle 10% finer, 10% finer. As grain size of a given sample increases, a grain size increase. Grain size increase. Grain size increase. Grain size increase. As grain size of a given sample increases, size of void increases. Grain size increase. Void size increase. 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 Permeability increase. Permeability increase. Void size increase. Permeability increase. Permeability is proportional to the square of d10 square. It's a square of grain size. K is directly proportional to d10 square. Effective grain size d10 grain size. Effective grain size. Here's an obtain empirical equation for clean sand, no silt, no clay. Clean sand and gravel. Clean sand and gravel. Clean sand, silt, no clay. Of course, soil has larger pore diameter, hence greater K. Grain size and coarse soil larger pore sizes, hence greater grain that of fine grain soil. Coarse grain K greater than fine grain. Fine grain K greater than fine grain. Coarse grain soil K greater than fine grain soil. Coarse grain soil K greater than fine grain soil. Coarse grain soil K greater than fine grain soil. Effect of properties of pore fluid on permeability. Properties of pore fluid. Pore fluid. Again, size, shape and size. Size, shape and size. Shape and size, coarse size and shape of a particle, size and shape of a particle, size and shape of a particle, pore fluid, pore fluid, pore fluid. K varies with density of water. K vary with density of water. This unit weight of water is proportional to viscosity. It's proportional to viscosity. K is directly proportional to density of water, inversely proportional to viscosity. Density proportional to viscosity. Viscosity. Proportional density is directly proportional to density and inversely proportional to viscosity. And density of water and viscosity depend on temperature. Density of water and viscosity depend on temperature. Proportional to density inversely proportional to viscosity. Effect of void ratio. Number 2 pore. Shape and size. Pore fluid. Number 3 क्या है void ratio. Void ratio. The Poiseuille's law of flow through capillary tube is idealized. The idealized interconnecting void spaces can be reassured to capillary tube. Void ratio. K is equals to C ds क्या है some effective equal to d10 q d10 square q d10 square rho w. Rho क्या है density of water by viscosity. Density by viscosity E cube by 1 plus E. E cube by 1 plus E. By 1 plus E. Void ratio. K is directly proportional to E cube by 1 plus E. E cube void ratio has an effect on permeability. E cube by 1 plus E. E cube by 1 plus E.
E cube by 1 plus e proportional to e cube by 1 plus 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 b. Hi! E cube by 1 plus e cube by 1 plus e cube by 1 plus e. Fine grain soil, fine grain soil, e cube by 1 plus e, coarse grain soil, e cube by 1 plus e. How is it different? K1 by K2 equals to अच्छा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए C कांस्टेंट है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए C कांस्टेंट है Are you studying maths? No, I'm studying geotech. Equals to C E cube. A is equals to C E cube by 1 plus E. C E cube by 1 plus E. Constant for coarse grain soil. Constant for coarse grain soil. Constant for coarse grain soil. If case are proportional to E square. Whatever. 1 plus B. 1 plus B square. 1 square. 2 square. Okay. Number 3. Size and shape. That was also like pore fluid. Then it was size and shape, pore fluid, void ratio. It's geotechnical engineering. Effect of degree of saturation. What are you studying? In which class are you? I don't think you are studying. It's not the time to study. I have my exams tomorrow, so. It's about soil and its properties. Degree of saturation. VW by V. It's completely filled with water. VW by SR is equals to degree of saturation. VW by V. Are you are you studying or you are doing job? Student? SR is equals to VW by V. VW by V. SR is equals to VW void completely filled with water. Void completely filled with water. Void completely filled with water. SR is equals to 1. SR is equals to VW by V. Water, void. Void completely filled with water. SI equals to 1. I done my BTech. Oh, what, like, which branch? Like, you never heard of geotechnical engineering? Oh, it's nice. If air is present in void, it obstructs a movement. K decreases. Degree of saturation. Void's completely filled with water. What? Oh, computer engineering. Nice. Taking words completely filled with water. Words completely filled with water. Words completely filled with water. SR is equals to 1. SR is equals to 1. Okay. SR is equals to 1. SR is equals to 1. Air present. K decreases.
air present decreases. Partially saturated water as well decreases probability of saturated water as much as probability of a partially saturated water soil mass is considerably slower. Bye. I don't want to struggle. See you next time. I'm just studying. Probability of saturated soil is considerably smaller than that of fully saturated soil mass. Okay. Absorbed water. So at first, it was size, shape and size. Then it was pore fluid, shape and size, pore fluid, void ratio. Then it was degree of saturation. Now it's adsorbed water. Thank you. Adsorbed water. Adsorbed water. Adsorbed water. Adsorbed water. Clay soil adsorbed water. Okay, reduces passage of flow of water, permeability decreases. As reduces the passage of flow of water. Okay, decreases permeability of stratified soil deposits. Fine. Why are you deleting your messages? Okay. Derive an expression to calculate permeability of soil in confined aquifer. Confined aquifer. I think QL by E del Q Q Q L Y delta H Q L by H T. Unconfined है ना? It's confined aquifer. Length of the aquifer L at aquifer is within 2 points. H1, H2. So much. You have an expression to calculate permeability of soil in a confined aquifer.
Length of the aquifer L. Length of the aquifer L. Add difference between 2 points, H1, H2 cross-sectional area flow. Area is equals to B, thickness of the aquifer into width. Thickness of the aquifer into width perpendicular to flow. Sectional area B into W. Area B into W. Area. Sectional area Q is equals to KIA, KIA. I की जगह में H2 minus H1 by L is equals to QL by A. इजी तो है, इसमें क्या है? Expression developed by permeability of soil in a confined aquifer. Permeability of a soil in confined aquifer. K is equals to KIA. As stratified. K is equals to KIA. KIA. A stratified soil. H2 minus H1 in confined aquifer. K is equals to KIA. K is equals to KIA. In confined aquifer. By dr, equal to pi RH by RH. So, R12 plus H2 H2 H1 H2 square H1 square K dH by dr 2 pi RB 2 pi RB 2 pi RH 2 pi RB 2 pi RB 2 pi RB 2 pi RB integrate R1 to R2 H1 to H2 2 pi RB B2 अलग हो गया DH H2 minus H1 minus H2 minus H1 minus H1 square इसमें होता है 2 pi RH और 2 pi RH होगा अनकन्फाइंड में 2 pi RH H इसमें D है में R D R by R क्या होगा ln R 2 by R1 2 pi R 2 pi R H और 2 pi RV delta H DH by DR DH by DR फिर DH by DR DH by DR DH by DR फिर HD H2 minus H1 R2 to R1 H2 to R1 H2 to H1 R2 to R1 H2 integration H2 square by 2 H2 square by 2 H square by 2 ये 2 2 कट 2 रह जाएगा ये 2 pi R H होता है यहाँ पे R H2 to H1 by R ये क्या है यहाँ पे H1 होगा H2 minus H1 होगा R2 super होगा H2 by H1 R1 से R2 तो log ln R2 by ln R1 by ln R1 by ln R2 ln R1 by ln R2 H2 square minus H2 square R2 H1 H2 पर R2 R1 नहीं है H1 ऊपर है ये ऊपर है तो ये ऊपर आएगा इसमें R1 ऊपर है R1 ऊपर आएगा
So unconfined में R2 to R1, unconfined में R2 to R1, R2 से R1 तक, R2 से R1 तक unconfined में, और confined में R1 से R2. Confined, unconfined, confined. K is equals to KIE, KIE is equals to KIE. Now I is equals to DH by DR. I is equals to DH by DR. I is equals to DH by DR. A is equals to A is equals to 2 pi H. A is equals to 2 pi R to H. Confined by unconfined by 2 pi RB. 2 pi RB. K is equals to KIA, I is equals to DH by DR, फिर A is equals to 2 pi RH, unconfined में 2 pi RH, 2 pi RH. Now confined में भी आएगा और इसमें आता है इंटीग्रेट R R1 से confined में R1 से R2, unconfined में R2 से R1, R से R2, R2 से R1, R1 से R2, R2 से R1, confined में R1 से R2, इसमें R2 से R1, R1 confined में R2 से R1, ठीक है. ln आएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर बाय 2 ln ये h आएगा से. Okay, so next we have a stratified soil. A stratified soil deposit consists of 4 layers of equal thickness. Okay, the coefficient of permeability of second, third and fourth layer are K दिया हुआ है. K 1/3 of K 1.9 K. Average permeability of the deposit. Compute the average stratified soil deposit of folder दिया हुआ है K. Now compute average permeability of the deposit. Average permeability of the deposit at parallel and perpendicular to the direction of stratification in terms of permeability of the top layer. ठीक है, parallel and perpendicular direction of stratification. Parallel and perpendicular to the direction of stratification. Parallel to the direction of stratification. Perpendicular, parallel and perpendicular direction of stratification. KH1 क्या बोलेगा यहाँ पे of equal thickness equal है KH1 K2 H2 by H KH1 K2 H2 by H permeability K horizontal is equals to K1 H1 plus K2 H2 K1 H1 plus K2 H2 by H K1 H1 plus K2 H2 by H K vertical is equals to H by H1 by K1 plus H2 by K2 H1 by K1 plus H2 by K2 K1 H1 K2 H2 by H. Find the average vertical permeability. Find the average vertical permeability of a soil mass made up of 3 horizontal layers. Find the average vertical permeability of a soil mass made up of 3 horizontal layers. Average vertical permeability. Horizontal, vertical. Average vertical permeability of soil mass of 3 layers. First and second layer have same thickness and the third layer has this vertical permeability. Okay, the coefficient of permeability are this and this. Okay, so average vertical permeability is H by H1 by K1 plus H2 by K2. H by H1 by K1 plus H2 by K2.
H by H1 by K1 plus H2 by K2, where the average vertical permeability H by H1 by K1. A constant head permeability test is carried out in a sand sample having diameter 8 centimeter. A constant head permeability test. So constant head permeability test K equals to QL by HAT. QL by HAT. QL by HAT. Constant head permeability test. Constant head. K is equals to QL by HAT. K is equals to QL by HAT. K is equals to QL by HAT. और constant head है ये और एक होता है falling head. Falling head में अलग होता है. Falling constant head. Falling head K. Constant head K is equals to QL by HAT. QL by HAT. Falling head 2.3 AL. 2.3 AL by A T2 minus T1. 2.3 AL by A T2 minus T1. 2.3 AL. 2.3 AL by A T2 minus T1. 2.3 AL by A T2 minus T1 log H2 by H1. Log H2 by H1. Log H2 by H1. 2.3 AL. 2.3 AL by A T2 minus T1 log H2 H1 by H2. Log H1 by H2. Log H1 by H2. Log H1 by H2. 2.3 A1 log H1 by H2. Okay. पर्सन हैविंग डायमीटर दिया हुआ है, सो उसमें से एरिया निकल जाएगा आई गेस पाई आर स्क्वायर. ओके, एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर. देन हाइट h दिया हुआ है क्यू एल बाई ए QL by HAT. QL by HAT. H, I guess this is H20. QL by HAT. मिल जाएगा QL by H. Quantity of water discharge in 15 minutes. It's water discharge through a sample in 15 minutes under a constant head of 1 meter is 1.2 kg. QL by H, constant head of 1 meter. H 1 meter A T. 15 minutes T I think seconds में convert करना होगा is 1.2 kg. kg को मीटर में convert करना. One gram is equals to 1 centimeter cube. So 1.2 gram is equals to 1 gram. उसको ग्राम्स में करो 1200 सेंटीमीटर क्यूब में करो. ओके, कच्चा 1 gram is equals to 1 centimeter cube. 1 gram is equals to 1 centimeter cube. So उसमें से centimeter cube versus log Q is equals to QL by HAT. QL by HAT. K is equals to QL by HAT. K is equals to QL by HAT. HAT, right? Yep. Per second. Okay. Let's see what's got here. A sand deposit has a porosity of 0.25 and specific gravity. There's the critical hydraulic gradient of sand is. A sand deposit has a porosity of 0.25 and specific gravity 2.6. The critical hydraulic gradient for the sand is. A sand deposit has a porosity 0.25. E दिया हुआ है, specific gravity दिया हुआ है. Critical hydraulic gradient for the sand is. Hydraulic gradient for the sand is. Porosity दिया हुआ है. N दिया हुआ है, E नहीं दिया हुआ है, but ratio नहीं दिया हुआ है. But critical hydraulic gradient for the sand is. इसमें हमको थोड़ी पता है क्या करना है. उन्होंने भी तो शायद नहीं पढ़ाया है.
E is equals to void ratio is equals to porosity by 1 minus porosity. Void ratio is equals to porosity by 1 minus porosity. E is equals to n by 1 minus n. E is equals to n by 1 minus n. E is equals to n by 1 minus n. Porosity by 1 minus porosity. Porosity by 1 minus porosity. Now n porosity is equals to E by 1 plus E. E by 1 plus E. Now hydraulic gradient. Okay, hydraulic gradient for sand deposit. 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 Acid. Oh, no. Hydraulic gradient is equals to G minus 1 by 1 plus E. G minus 1 by 1 plus E. G minus 1 by 1 plus E. Quicksand or boiling condition. Quicksand or boiling condition. Seepage analysis. My friends. Yes, my ladies, wait. I was about to say that. What are you guys doing? Where is it? This thing's going to go কৈ আছে নেকি তোমাৰ লগত ডিসকাস কৰি গৈ আছিল মই শুনিছো কথা ignored as fuck because it was true, right? মই তাৰ ভিডিও কৰিব পৰুৱাৰ লগত sex আস্তাগফিৰুল্লাহ মোৰ লাইভ চলি আছে what? Live চলি আছে এই তাত এইফালে কেমেৰা ঘূৰা আছে of what? YouTube. Yeah. What are you? Censor. Naskir's channel censored over there. Viral হৈ যাম মই ভাবি আছো এক্সামৰ পিছত অল টাইম ব্লগ কৰিম গোটেই দিন ব্লগ কৰি থাকিম আমিও কম বে ইমান মানুহ ব্লগ কৰি ইমান টকা ইনকাম কৰি আছে আমি কেমেৰাটো বহুত বেয়া যে আমাৰ আছে গেলা কেমেৰা আইফোনত যে গেলা ইনভেষ্ট কৰিম মই এনে ব্লগ কৰি ইণ্ডিয়া ব্লগ কৰিম ব্লগ কৰি let people roast me বোলে what are you up to তো গোটেই দিন ৰুমত নাই কি আহিছ তো কালি পৰীক্ষা খুব মানে ভিতৰত ফিলিং আছে নে আছে মই এনেও ফেল তো সেইটো কাৰণে মই ইমান হেৰি দিছো চবতছে টান এইটো মই ঘৰ যাওঁতে অকল এইটো চাবজেক্টে পঢ়িছিলো বেলেগ একো পঢ়াই তথাপিও ফেল কৰিবি ইমানে মোৰ গৰম হ'ল লাষ্টলে মই একদম এৰি দিলো না এদিন এৰি দিলো যে এতিয়া কালি ৰাতি মই ফাৰ্ষ্ট দেখিছো তাৰপিছত এৰাৰ পিছত এইটো চাবজেক্ট this is the motivation you should need for failing an exam क्या करे तुम दोनों कहाँ घूमने जा रहे हो জানো এতিয়া দেখো সাকলে मैं जाबी माने हेके जाम माने जाबी সাকলে तो तू बॉयफ्रेंड লগত যাবি এটা কাম কৰো অলপ শুই লওঁ আজি ৰাতি অনলাইন কৰিব লাগিব হবি কৰিব লাগিব শুবই লাগিব কালি কাম আছে क्या खाया फिर पूरी खाने गई थी तुम पूरी नहीं मिला मुझे चिकन very hygienic guys my friend eats only good food the best in the world finest of the cuisines supreme delicacy বহুত আছে দে মই I'm still in chapter 2 আমাৰ কোনে কাটি দিছে not AC আমাৰ JC কাটি দিছে hi guys so
I met my friends who say dirty stuff and face reveal this is the person. कल घूमने जाइए नहीं जाऊंगी मेरे पास टाइम नहीं कहाँ आज I thought कल 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 निहारिका बोला मुझे फैंसी बाजार जाने के लिए चलो ना फैंसी ना जाओ मैं डॉक्टर के साथ जाऊँ कौन तू जाता आयुर्वेदिक हेयर फॉल दिखाऊंगी हेयर फॉल का मेडिसिन या फिर कुछ जो भी देगा लूंगी देन मेरा आयुर्वेदिक काम है हैं? इट्स अ वेरी गुड स्लो है बट ভাল হয় वैसा नहीं साइड इफेक्ट्स नहीं कौन है कोई नहीं है कोई नहीं है हम्म। क्या बात है Hi guys. जब We have our last exam, but we don't want to study. Karan, we are not going to study. মই পঢ়ি আছো can you see মই পঢ়ি আছো ৰে বহি लो এটা কিবা বেলেগ দেখিছে কিয় इसको मतलब मिरर हो गया ये इस तरफ आ गया ये इस तरफ आ गया समझी हाँ पर the features are kind of different. See? मिरर है ना मैं ऐसे दिखती हूँ हाँ fox Fox. your face is like a fox I know There, I have come across an observation. There are two types of people in context of observing things. Mm. ठीक है Mm. एक है frog और एक है crane. Mm. Like frog, like he or she, मतलब it focuses on something with extreme detail. Okay, at a time. Whereas a crane sees the entire picture. ठीक है वो ऊपर से देखता है सारा the entire topology. And the frog sees everything like from detail to different, like a leaf का एक vein. And there are two types of observers. One is the frog and the other is the crane. You are the frog and I'm the, yeah. You're the frog and I'm the crane. उड़ी था कैसे तो I've come to know that. Makes a lot of sense. yeah it does সেইকাৰণে ইউ ওৱান গছিপছ ন ওপৰা ওপৰকে চব বস্তু জানিব বিচাৰ তই মানে মই কিবা এটা লাগিলে সেইটোৰ ভিতৰত যাম কিয় হৈছে ক'পা হৈছে তেনেকা আৰু ইউ লাইক চব বল মেৰে কো क्या हुआ है सब बोल आई नीड एवरीथिंग Yes. guys I'm a frog And I'm a crane. फिर से करो क्रेन कैसे करता है meow did cranes reproduce with a cat once a crane and a cat had a fight and she was the and I'm the result. product. It's like दोनों ही मच्छी खाता है दोनों ही मच्छी खाते हैं makes a lot of sense. वो आया था कोई माई रूल 80 आके ऐसा वो बोल रहा था मतलब क्या पढ़ रही हो मैंने बोला जियोटेक फिर ही वाज लाइक व्हाट इज जियोटेक आई नेवर हर्ड ऑफ इट देन आई सेड इट्स जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग देन ही तब मैं बोली ओके लाइक आर यू डूइंग जॉब और लाइक कुछ कर रहे हो पढ़ रहे हो देन ही इज लाइक ना आई एम डूइंग जॉब आई डिड माय बीटेक देन आई वाज लाइक बीटेक करके तुमको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बोल के एक सब्जेक्ट है वो नहीं पता है ही से लाइक आई डिड कंप्यूटर इंजीनियरिंग बोल के आई वाज लाइक यस नाइस वेरी नाइस कोड्स उसके बाद उसको नौकरी मिला नौकरी कर रहा है वो साकरी कर रहा है जॉब मिला उसको नौकरी साकरी जॉब oh my god like when I get too comfortable with my person na ভাষাটো কিবা বেলেগ হৈ যায় মানে বুজি নাপাওঁ কোনটো কওঁ ইমান ৱৰ্ডছ ইন মাই ব্ৰেইন মানে মই কোনটো কওঁ এতিয়া শুন না কালি মেঘাস্মিতা গৈ আছে ন ওলাই মেঘাস্মিতা
So মোৰ ন কেনেকা লাগিছে জানো আমিও এনেকে যাব পাৰো লাষ্ট টাইম যেনেকে আমি চিটি চেণ্টাৰ গৈছিলো ৰাতি ঘূৰি আছিলো বল। ৰিমেম্বাৰ বাট ইন থাকিব। টাইম ক'ত থাকিম থাকাত কষ্ট কাল হৈ যায় ন তাৰপিছত বোলো মই বোলো মেগাস্মিতাৰ লগত হেৰি ডেইলি বিলাক এনেকে পিটিম বোলে তো ক'লে নেকি তাই নহয় ক'ব নহ'লে সুধিছা তাই বেয়া নাপাব ফাৰ্ষ্ট হয় ফাৰ্ষ্ট তাই কি হ'ল তই হেৰিত থাকিবি সিহঁতে যদি এৰেনবি কৰে এৰেনবি so like they will book a room and a drawing room na the drawing room at No, baby, not everything has a drawing room. no No, you know the cost? What that one? কিমান দাম হয় Like, I don't know, but it's costly, no? নালাগে মানে মই ভাবি আছিলো এনেকে মানে ৰাতিটো ঘূৰা হ'লে কি মজা লাগিল হয় ঘূৰাও তুমিতো ঘূৰিব পাৰা মই পাৰো তুমি নোৱাৰা what the fuck does it mean ময়ো পাৰো মই নাথাকিম মইতো ঘৰত ঘূৰি যাম yeah that makes sense তুমকা yeah, তুমি মোৰ ঘৰত থাকিব পাৰা বোলো আইতাৰ লগত আহিবা নাথাকো আইতা বিলাক তোমালোকৰ এক্সামটো শেষ হ'ব পাৰাই নাই তোমালোকে ওলাই গলা বোলে উৰি আছা আজি থৰি না কালিহে ঘৰ যাবা নেকি কালি নাযাওঁ কালি মোৰ কাপোৰ চাপোৰ বহুত ধুব আছে I need to do all the room সাফ সাফাই then I'll থাকা go. কেইদিনমান Yeah, I'll stay. we'll do picnic মই পাস্তা বনাম sandwich Sandwich. We'll go that Pyro. हरी गुवाहाट जो बीच में एक पार्क देखा था ना हमने जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे पिकनिक करने का remember हाँ ठीक है हाँ वहाँ जाएंगे बोला पिकनिक पर ये तो free है सब park सब park free all the parks are free that's why इमान भीड़ हुआ ऐसे है yes क्यों क्या free वैसे वो जो ब्रह्मपुत्र का जो वो पार्क खुला है वो फ्री कर दिया है तो बाकी पार्कों में कोई नहीं जा रहा ये सब पार्क फ्री loss एक पढ़ाई के बीच में जब बोर लगता है तो क्या करना चाहिए reels और रील्स देखते देखते ज्यादा टाइम चला जाए तो पढ़ाई करो तुम इतना मोटा किताब लेके बैठी हो ই আমাক পঢ়ুৱাই নাই কেইটামান বস্তু তাৰপিছত ফৰ্মুলা বিচাৰি আছো ক'ত আছে তেনেকুৱা क्यों क्यों इमान incompetent teachers को why are you so incompetent they didn't get time to complete the syllabus why आपको जॉब किसने दिया आपको लगता है कि आप यहाँ जॉब लेकर स्टूडेंट्स को हैरास करेंगे हाँ तो पहले कोई दिलो oh my god সেইকাৰণে তো নোৱাৰো তই বেছি বকা জাননে মানে you know like কেতিয়াবা ফচিবি বেয়াকে ফচিবি তই इतना नहीं बकना चाहिए क्या है फिर क्या अभी भी फोन सबमिट चल रहा है हाँ दे आती हूँ मैं एग्जाम से पहले मैंने everybody is so obsessed with you मानस तू ये क्या ओ मोइना फोन तो दी दे मोइना वो मुझे पसंद करता है like as a student I know it's like they also know कि students लोग शैतानी तो करेंगे that's like their job আৰু मुझे सोचता है तो आई दे फोन उलाई पिने धरा परिसो सिटिंग करी लास्ट नाइट oh my god like सिटिंग कर कि धरा गया परिसो बहुत respectfully ले वैसे बाकी in context of the boys of course boys तो गुड़िया ही थे oh my god সেইকাৰণে মই তোমাক যে ৰীলটো পঠাইছিলো তুমি কৈছিলা এইটো মই নেকি বুলি মই লিটাৰলি হেটো ৰীল দেখিলে লাইক the phone ringing in between exam বলে মানে ৰীল চাইছ মানে এক্সামত চিটিং কৰি আছে এনেকে তাৰপিছত চিটিং কৰা মানে বোৰ হৈ গ'ল মানে এইটো বেলেগ লেভেলৰ হ'ব ইমান হাঁহি উঠিছে মোৰ হেটো দেখিবা লিটাৰলি তোমাৰ কথা মন পৰিছে মোৰ আৰু আমাৰো লিটাৰলি এনেকুৱা হয় মই কিবা এটা চাই আছো বিচাৰ পোৱা নাই ফোনটো এনেকে ললো হাতত ডাইৰেক্ট ইনষ্টা
তিনি চাই গ'ল মই কি বিচাৰি আছিলো মানে puzzle. ये सब कब पढ़ाया था? ये सब जब पढ़ाया था तब से आज नया देख रही हूँ और मुझे पता भी नहीं था है बोल के कॉपी में. তহঁতৰ কি কালি ইজি সাবজেক্ট বেগ লাগে বহুত তো হৈ গ'ল নাই মানে মই পঢ়ি আছো মোৰ ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ আছে চ' ইটছ বেটাৰ দেট আই গেট ডিষ্ট্ৰেক্ট এণ্ড দেন কাম বেক ৱেষ্ট অফ টাইম তোমাৰ ভিতৰত पोर्शन की कमी है. The portion that Meghashmita is going to get tomorrow. মেঘা মই যে চুমাকচি ফলো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো তাই মোক লিখাও নাই Quicksand, quick condition or boiling condition. Quicksand, seepage force. So now I'll tell you what is quicksand. You know quicksand, jo tanaka pitch hai. So that's a quick condition, boiling condition, quicksand, seepage force, or pressure. Let us consider the. Okay, wait. Consider the upward flow of water. Pressure increases. So the head exceeds the critical rate will cause what follow the water and the level and condition of force at the bottom of the source will just be equal to the
Yes, of course. Critical conditions. I see. Hydraulic gradient is equals to HCyL is equals to G minus 1 by 1 plus C. Critical condition is responsible for the phenomena of oil of solidation, oil of friction, oil of friction, oil of sand, friction, minus friction. It's A by 2. It's A by 2 is equals to G minus 1 by 1 plus E. G minus 1 by 1 plus E. It's A by 2. അതിനുള്ള ഈ Not a 2. Column that is a बड़ा program उसमें Jan Clover. you. It's junior senior so Anuja will is in third. Hello, welcome back to my channel. हमारे third semester में बहुत कैसी है Oh, इस वाली में नाम की I don't know. She's out. she's out where she's gone Her home? No, not home. I guess she's just out from hostel. বাইরে থেকে থেকে rent. end of time couldn't bomb के नहीं आ पाया थोड़ा लोग आज complain read How will I know?
Mhm. Bye bye.